So, we are going to discuss the spokesperson endorsement today. Why people go for spokesperson endorsement? Keep it in mind, up till now we decided the different types of message strategies which we will be using in advertisement or a commercial. And then the creative heads and the companies or the agencies, they do decide on the appeal which we will be using in the advertising or commercial, and then at third stage we decide on the execution of the ad or the executional frameworks. Once all these matters are decided, the last decision is to make about the spokesperson endorsement, whether we will be making a spokesperson endorsement or not. We will be using a spokesperson as part of the execution or not. So, actually it is very important to make use of the spokesperson endorsement in our television commercials or in the ads, as they are the professionals who can play on behalf of the brands. So there are four different types of the spokesperson, and the very first is the celebrities. Celebrity is actually the well-known personality, and why we use celebrities as spokesperson. Keep it in mind, whenever we are supposed to come up with certain associations, or we are supposed to leverage secondary associations of the celebrities towards the brand, we may make use of the celebrities. And keep it in mind that celebrities are mostly used, especially in that time or the life cycle of a product or service, when the product is in introduction stage, or in other words, when the brand is supposed to develop or a brand image has to be created. In most simple words, we would say that if we are supposed to personify the brand, give the brand certain values, we make use of celebrities. Why? Because those characteristics or attributes of the personality of the celebrities are leveraged towards the personality of the brand. But keep it in mind, celebrities is not a cheaper game. It's so expensive, and the trend has, you can say, on one side it is increasing for new brands, but for the older brand it goes down. And another fact which has come to the surface is that the younger people or the younger target markets may be more tilted towards the use of the celebrities in comparison to the old age target groups. This is what the research shows. And there are certain additional celebrity kind of endorsement which are termed as celebrity voiceovers, dead person endorsements, and social media endorsements. Keep it in mind, celebrity voiceovers are again celebrity endorsement, but without the identification or projecting or showing the face of the celebrities. Why then we use the voiceovers only in our ads or commercial? The main reason behind that is that those voiceovers are so professional in projecting or executing the advertisements. That is why the voiceovers of the celebrities are used for the brands. But keep it in mind, usually we make use of the voiceovers in radio advertisements or in television commercials, for which the celebrities are especially projected in earlier stages of the brand or the product. Dead person endorsement can be used, but keep it in mind, it is a bit controversial. So dead person endorsements are used in some cases where it needs to be. When the
advertiser has to create certain kind of resonance or a certain strong linkage between the brand and the target consumer. At that very moment we do use dead person endorsements. For example, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के स्पीच की जो वॉइस सोर्स है उसको यूज किया जाता है एट सर्टन ओकेजन्स लाइक 14 अगस्त या 23 मार्च, या उस केस में हम उनको यूज करते हैं. बट सम टाइम इट मेक इट कंट्रोवर्शियल. मैं कायद-ए-आज़म साहब की बात एंडोर्समेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेड पर्सन एंडोर्समेंट्स की बात कर रहा हूँ, जहां पे मुख्तलिफ अदर सेलिब्रिटीज होती हैं जिनकी डेड पर्सन वॉइस जो है वो यूज होती है. वो कब कंट्रोवर्शियल बन जाती है? जब ब्रांड की जो ट्रांजिशन है, जब ब्रांड जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है और हम उसी पुराने एंडोर्समेंट को साथ लेके चलते हैं. And the third one is the social media endorsement, in which usually the companies do pay celebrities to make tweets or certain type of social media texts, और ब्लॉगिंग में वो अपने कुछ किरदार जो है वो प्ले करते हैं. The next type of spokesperson is CEOs, जहां पे हम सेलिब्रिटीज को नहीं यूज करते, तो हम CEOs को भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू पर्सोनिफाई अ ब्रांड. और ये किस तरह के ब्रांड्स में यूजुअली हो रहा होता है? ये उन ब्रांड्स में हो रहा होता है जहां पे हमने उसको कोई एग्जीक्यूटिव टच देना है, या कोई ऐसी सीईओ को एज एन एक्सपर्ट यूज करना होता है, या सीईओ को एज ए सेलिब्रिटी यूज करना होता है. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन दिस. फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि परसोना के एड में जमाल शाह को हम लेके आते हैं और जमाल शाह इज अ सेलिब्रिटी, लेकिन अगर वहां हम देख ले ही हैज मेड टू अडॉप्ट द सीईओ's पोस्चर, तो उस केस में हम सीईओ's को यूज कर सकते हैं. अगेन द एक्सपर्ट्स कैन बी यूज्ड, और एक्सपर्ट से हमारी मुराद ये होती है कि उस बंदे को, चाहे वो सेलिब्रिटी है या नहीं है, वो इतना जाना पहचाना है या नहीं है, लेकिन उसको इंडस्ट्री जो है एक्सपर्ट मानती है. बाज़ दफा एक्सपर्ट्स जो हैं आम लोग या टिपिकल पर्सन भी हो सकते हैं. मसलन कोई भी डेंटिस्ट आपने उठा लिया और उसको एज ए स्पोक्स पर्सन एंडोर्सर यूज कर लिया. बट कीप इट इन माइंड कि बाज़ दफा हम एक्सपर्ट्स एज सेलिब्रिटीज भी यूज कर सकते हैं. मसलन सनसिल्क के इश्तिहार में या सनसिल्क के एंडोर्समेंट्स में दे यूजुअली ब्रिंग दोज पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी और पर्सनालिटी और द फिजिकल पर्सनालिटी, जो बार्बर्स है, मेकअप है, आर्टिस्ट है, या इस तरह के लोग. टिपिकल पर्सन्स वो लोग होते हैं जो कि सेलिब्रिटीज नहीं होती, इतने जाने पहचाने नहीं होते, वो सीईओज नहीं होते, वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, वो आम लोग होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज ए स्पोक पर्सन. तो कीप इट इन माइंड, टिपिकल पर्सन्स का अपना एक रोल है, क्योंकि अगर वो पेड टिपिकल पर्सन है तो फिर तो क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा होता है. लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन से आम कंज्यूमर्स को हम उठा लेते हैं तो दैट वर्क्स वेरी वेल, और वो हमारे लिए एक इनफैक्ट इट बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ और अ टेस्टिमोनियल. I have given you these 3 links as an example. If you click them, so you will find all these spokesperson example in the television commercial. जो पहला वाला है वो भी रमजान के हवाले से है, जिसमें वॉइस ओवर्स है. सेकंड में भी वॉइस ओवर्स है, बट इट प्रोजेक्ट्स माहिरा खान इन पेंटीन एड. और तीसरे में भी विच इज रिगार्डिंग रमजान, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट सेलिब्रिटीज या टिपिकल पर्सन्स यूज हुए हैं विद वॉइस ओवर्स. लेकिन काइंडली यू डू नॉट एग्जिट दिस सिंगल लिंक. इसके नीचे और
बीसों आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे. You go through them and we will then include it in our class assignment which I have given you. And then we move towards the final game. I forgot to tell you about the source characteristics. Keep it in mind, all these spokesperson must be having or bearing such kind of characteristics like attractiveness, physical personality, physically भी वो attractive हो, personality wise उसकी values या जो उसकी personality है वो इतनी attractive हो कि लोग उसके साथ जो likability है या favorability है उसको associate करते हो, और वही likability या favorability हम extend करते हैं towards the brand. Again, he or she must be trustworthy. ऐसा ना हो कि आज वो एक एड में आ रहा है और कल जब वो ज्यादा पैसों के लिए किसी और कंपेटिटिव ब्रांड के लिए चला जाए या दूसरे मामलात में उसको लोग ट्रस्ट ना करते हो. Same is the case with the source characteristics like expertise. हर एक को आप नहीं ला सकते एज अ सोर्स पर्सन. ये देखना पड़ेगा कि उस फील्ड में, उस चीज में उसकी एक्सपर्टी है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, वी कम अप विद a young lady or young girl in our advertisement, और जिसको सारी दुनिया जानती हो कि इसकी तो शादी नहीं हुई. So in fact, if we use that lady or a girl for recommending such kind of brands like डालडा or something like that, तो ममता का प्यार कैसे वो जो है मटीरियलाइज कर पाएगी जबकि वो पूरी दुनिया जानती हो कि she is not worth of. And same is the case with the credibility. उसकी credibility इतनी होनी चाहिए with respect to the product category, with respect to the personal values, and with respect to her social status in the society. And then we move towards the final game of in the whole campaign. That is actually tied on these things. So when you are supposed to build your IMC campaign, you must choose a message strategy for each creative brief. And for that creative brief, when you are choosing a message, I told you very earlier that the message strategy must be in alignment to the utmost goal of that campaign and the means and chain. So you must be able to come up with such type of message strategy which can portray the central theme of the ad with the attributes of the product and extending it towards the benefits which consumers will gain, and as a result of those gains or benefits, what type of personal value he or she will be able to achieve. And then we choose an execution framework for each advertisement. Mind you, again, the way the message strategy is, the way the execution framework will be decided. It is impossible that you come up with a message strategy which is full of fun, and when you are executing you come up with a sexual appeal or something like that, or which may be very rational or emotional appeal executed through somewhat such kind of execution framework like you can say animation or something like that, which may not be in alignment to the appeal or in alignment with the message strategy or the goal of the creative brief. So once these three things are decided, then you are supposed to decide on, well, any type of endorsement be used, and if so, which kind and who. And then you move towards the tagline. What tagline will you use to ensure consistency? This is really important because the tagline serves the advertising campaign and the slogan serves the brand. So mostly
we should come up with such type of tagline which can ensure the consistency or alignment with the brand slogan, and then you move towards the final campaign. Keep it in mind, I will be giving you another assignment in the coming week, inshallah, for creating an advertisement, keeping in view all these parameters, but you must perform the previous assignment which is most relevant to chapter 6, 7, 8, and then we will move towards using this assignment for having a print ad or a television commercial, but I would preferably ask you for a rough print ad elaborating the execution framework, elaborating the message strategy, the central theme, the creative brief, and the tagline which you will be using. So I do expect that you will understand